अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। डेज़र्ट फाउंटेन के इस हफ़्तावार जायज़े में आप सबको दोबारा खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अशर अली। अशर भाई अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इतनी गाढ़ी उर्दू में बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है हम सारे सब्सक्राइबर जो 1-2 हैं, वो भी लूज़ कर जाएँगे यार। नहीं, मैं सोच रहा था कि ये एक दफ़ा हम ट्राई करते हैं कि पूरी एपिसोड जो है ना प्योर उर्दू के अंदर हम करें। तो फिर हमें पता चलेगा कि पाकिस्तानी होने का सबूत तो यही है कि आप पूरी एपिसोड जो है एक वीकली रिकैप। वेल टू बी रियली ऑनेस्ट, पाकिस्तानी होने का सबूत ये तो कहीं से भी नहीं है, जो कि आजकल तो इनमें से किसी को ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब यही तो मसला है, जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो हम इंग्लिश सही नहीं बोल आप तो ख़ैर ठीक है, हम जैसे लोग इंग्लिश भी सही नहीं बोल पाते। उर्दू बोलते हैं तो हमें उर्दू भी हमें इश्यूज़ होते हैं कि जब हम उर्दू भी 30 मिनट तक 30 मिनट क्या मतलब 2 उर्दू, हाँ, मतलब यानी वो नहीं है एग्जैक्टली, मतलब यानी आप 100% उर्दू हम लोग बोल ही नहीं पाते। मतलब यानी ऑन एवरेज पाकिस्तानी कहाँ बोल पाते हैं 100% उर्दू। बिल्कुल। तो अशर भाई खुशामदीद और मेरे ख़्याल में इस हफ़्ते हम अपने रिकैप हफ़्तावार जायज़े का जो है वो आगाज़ करते हैं और ये हफ़्ता जो है थोड़ा-सा तहलका ख़ेज़ हफ़्ता रहा है और इसके अंदर कुछ बहुत बड़ी ख़बरें भी थीं, कुछ छोटी ख़बरें भी थीं जिसके अंदर छोटी ख़बरों में तो ये है कि वीक ऑन वीक जो है वो एस&पी 500 ऑलमोस्ट 5-6% जो है वो पॉज़िटिव था। लेकिन ईयर टू डेट जो है वो ऑलमोस्ट 16% नेगेटिव था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो मेटा का ले-ऑफ था और ट्विटर का जो ले-ऑफ था, एक 10 टू 13% दोनों ने जो है वो ले-ऑफ्स किए हैं। फिर उससे भी बड़ी क्रिप्टो की दुनिया के अंदर जो है वो हमें नज़र आया कि एफटीएक्स जो है वो बैंक्रप्सी फाइल करने के लिए चली गई है और मतलब हर जगह पे जो है ना तबाही मच रही है। तो अब समझ ये नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से किया जाए। मतलब ये तो फायर फाइटिंग जो है वो किधर से शुरू होगी, किधर से समझा जाए कि भई इधर जो है ना वो तबाही ज़्यादा हुई है और इधर कम हुई है। तो इस पर आप अपनी कोई अपने जो ये हिकमत के जो मोती हैं वो हमारे नाज़रीन को उफ, की नज़र करें। इतने मैं क्या कहते हैं, इतनी आपने प्यार से बोला, नज़र ही ना लग जाए इस पूरे सीन को। अच्छा जी, हम we're actually reviewing the week for ended that ended on the 11th of November 2022. Um, Before we proceed, please take a moment to pause and go through the disclaimer. By viewing this video, you are agreeing to waive all liability of losses you may suffer. If you do not agree to any portion of the recording, you may discontinue now. अच्छा जी, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला, जिस तरह आपने कहा कि फॉर द वीक ending 11th of November, S&P actually surged 5.9%. Nasdaq was up 8.1%. Actually, past 2 दिन में तो it was more than 10% for the week as the investors shook off a drop in cryptocurrencies. जो आपने जिक्र किया FTX का specifically, but हम देखेंगे कि Bitcoin भी was pretty shattered. Dow Jones was up 4.1%. I mean, start of the week was very very weak. Down था सब कुछ। फिर उसके बाद हुआ ये कि बेसिकली थर्सडे को ये अपना थर्सडे की ओपनिंग से पहले US Labor Department reported the CPI numbers for basically October. And हुआ ये कि CPI का जो डेटा था वो बेसिकली हेडलाइन जो CPI है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हेडलाइन जो आया वो तकरीबन 7.7% आया from a year earlier versus expectations of 8% on annualized basis. पिछले महीने 8.2% आया था. So that was a very big relief for a lot of the investors के एक तो नंबर 1 नीचे आया मंथ ओवर मंथ, और उसके अलावा एक्सपेक्टेशन से भी नीचे आया. एंड
although core CPI actually reported an increase of 30 basis points month over month, forecasts were actually for 0.5%. Actual figure 6.3% आई है. So they were actually expecting a higher increase this month for October, but it came out on lower end. So all in all, this ये जिस तरह जिसी मतलब the minute the market heard about this, the market was immediately यानी आप समझ लेना कि the market immediately created this positive momentum, एंड ओपनिंग के साथ ही आई थिंक छतें फाड़ दी थी बेसिकली, आप इस तरह कह लें, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर फ्रेज दैट आई वुड हैव, कि बिल्कुल छत फाड़ एकदम से क्या कहते हैं S&P नैस्डैक ख़ास तौर पे निकला है. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द अदर इंक्लूडिंग बिटकॉइन went through quite a recovery, and I think that was quite a spectacular show, because we haven't seen something like that since quite a while. And essentially अगर आप देखें तो 2008 से लेकर अभी तक भी we haven't seen anything like that. Essentially, when we talk about intraday jump that happened on Thursday, and then essentially the market followed through on Friday with a very very decent. I mean, I would say मुझे तो इतनी distribution नज़र नहीं आई. Maybe there was selling, probably there was to a certain extent, but market ने अपना बहरहाल momentum रखा. It wasn't as strong as Thursday, but was healthy enough to actually not offset what happened on Thursday. मुझे ऐसा लगा कि पहली मरतबा मार्केट को एक होप मिली है कि this was not a bear rally. As you know, what constitutes as a bear rally is the fact that basically it's like a short bounce, it's a dead cat bounce, and then essentially it moves back down. अब ये अगला हफ्ता ही बताएगा कि exactly क्या हुआ है. आया कि वापस मार्केट अपनी ट्रेजेक्टरी पे वापस आ जाती है कि नहीं, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ने बहरहाल इस न्यूज़ को एक अच्छी डायरेक्शन में लिया है कि दिस एसेंशियली मीन्स कि नंबर वन कि इन्फ्लेशन इज सॉफ्टनिंग, जो कि मेरा अपना, इफ़ यू आस्क मी, माय रीडिंग इज़ कि जो कोर CPI है that has a 30 basis points month over month increase, which means that removing energy and removing food prices, things are still looking up, and that's not a good sign in my view. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल होगा. जो हेडलाइन CPI है वो ज़ाहिर सी बात है has come down because of the fact that food and energy prices have come down, and therefore you see that decline. However, as I've said before as well, कि ये जो increase था, that was still lower than the increase that they were expecting. अब 20 basis points से basically it reported a positive surprise by 20 basis points, and essentially that's what the market is banking on. I am not sure if that makes room for a case, or that makes a case for a more permanent sort of rally, as I would अभी हम technicals भी देखेंगे उस पर. तो आई थिंक इन्फ्लेशन इज स्टिल अ यहाँ फैक्टर. पर ये कहा जा सकता है कि मार्केट या इन्वेस्टर्स जो हैं जनरली वो अभी भी राइजिंग ऑयल प्राइसेस से इतना कंसर्न नहीं है, कंसिडरिंग के जो CPI अभी नंबर्स आए हैं, यानी उन नंबर्स के आते साथ ही मार्केट ने उसी तरह से रिएक्ट किया. तो ऑयल प्राइसेस का बढ़ना जो है वो मार्केट अभी इतना उसको मतलब ये समझ रही है कि उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन नहीं होगा. क्या I mean, I don't know if I would necessarily put that way. देखें बहुत सारी when you look at the overall market, आपको दो तीन ट्रेंड्स नजर आएंगे. एक है लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिसमें हमने पहले ही बात की थी. That is comprised of so many things, right? I mean, the energy market or not, there's the long term trend that is defined by the macroeconomic and microeconomic health of companies and the US economy in general. उसके बाद आपकी ऐसी बात है मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म कुछ वेव्स आती हैं जहाँ पे बेसिकली एनर्जी क्राइसिस आएगा या एनर्जी प्राइसेस विल गो डाउन और गो अप. अब everything doesn't have to go in sync. For example, जैसे आपने कहा कि energy prices could go up but the market could choose to focus on some other things.
whereas energy prices could go down and the market could simply still go down because it's choosing to look at some other things. जब COVID आया तो energy prices were down, so that actually was the cheapest gas on the pump was probably what we saw recently in recent history 2020 mein. But market crashed because of the fact that they were looking at a lot of other variables, not just inflation. So inflation is one factor that the market looks at when they're trying to understand what is going on with the market. But more importantly, they also look at, and I would say this as a general point, is that agar aap long term trend देखें, short term trend देखें, a lot of this is being dictated by the US Federal Reserve and what they do with the interest rate policy. And interest rates are such an important part of the credit markets. I mean, basically, credit is such an important part of the overall economy, and interest rates are play such an integral role in the overall movement of funds globally now. मतलब अब अगर आप equity trading भी देखें तो cash equities तो बहुत कम trade करते हैं लोग. Typically, people trade margin. अब मार्जिन का मतलब है कि जो यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट सेट करता है उससे आगे आगे बढ़ते बढ़ते आपके मार्जिन की प्राइसिंग सेट होती है. तो एवरीथिंग इज सो इंटरलिंक्ड हियर कि a rise in interest, a low and steady interest rates are sort of the market takes it very healthy, in a healthy way, in a clear way. That interest rates are not going to rise anytime soon. I can plan a lot of other stuff both in the economy in terms of taking up loans and as well as margin trading as well as so many other things. But जब ये interest rates ऊपर जाना शुरू कर देती हैं, that's when the market gets rattled. As a general rule of thumb, obviously अगर आपकी जो return on your US Treasury bills या your corporate yields are higher than what the market is offering as a return on the on the stock exchange या dividend yield को देख लें, तो obviously versus that पैसा move होना शुरू हो जाता है from equities to the bond market. तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आती हैं तो एक्विटीज के लिए बेहतर होता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट इज गोइंग फ्रॉम बॉन्ड्स टू द स्टॉक मार्केट. मगर जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रही होंगी तो फिर ऑब्वियसली द इनवर्स विल हैपन, व्हिच इज स्टॉक मार्केट विल गेट पनिश्ड. नॉट इवन इफ इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स आउट इन टाउन, स्टॉक मार्केट से जनरली पैसा मूव कर बॉन्ड में आएगा. अब it's very important to understand that the bond market is one of the biggest markets. I'm actually forgetting as a percentage of the total asset class, as a percentage of the total investable asset classes, but it's huge. Any equities does come somewhere near, but it has nothing over it in terms of being the biggest asset class. तो आप imagine करें जब एक बड़ी asset class से पैसा उठकर छोटी asset class में आता है तो फिर एकदम से वो छोटी asset class prop up हो जाती है, right? चूंकि there's so much money coming to and meeting the small money and adding up to the small money. And then एक छोटे पूल में से निकलकर जब एक बड़े पूल में जाता है तो जाहिर सी बात है वो बड़े पूल की एपेटाइट तो अच्छी खासी होती है, मगर वो छोटे के लिए बड़ी कह रहे हैं ना मुजहर साबित होती है. It actually ends up turning very lethal for the equity markets because the movement is huge, right, in absolute amounts. And both relative to the sizes of the both markets, मतलब equity market के लिए वो move बहुत बड़ी होती है. तो like it or not, this is what is happening globally. Markets are switching, investors are moving their funds out from the equity market into the fixed income markets, and that is a movement that is going to continue to happen until and unless the Fed starts to actually move the interest rates down, which won't happen until at least 2024-ish, end of 2023, 2024, or will be given the current forecast. मतलब US Federal Reserve के chairman Jerome Powell ने खुद कहा है कि we keep having to change our forecast every time there's every time we sit for a meeting, and that means कि उनकी भी अपनी forecast accurate नहीं है. They could be they could be delaying their the final sort of peak कि जब interest rates peaking होंगी, जो कि अभी तक पीक नहीं हुई हैं. The peak was in 2008, last peak was at least in 2008 जब interest rates 5% plus चली गई थी. तो अभी तक तो हम लोग 4% something पे खड़े हुए. And that obviously has still headroom in terms of how much higher it can go. So that will cause destruction. It's something that you have to understand and you have to keep in mind as an investor investing in this market, is that yes, there will be these rallies and there will still be companies that are going to be doing great, and it's always a great idea to
if you actually understand this and you're well versed with this game, to be actually looking for certain bargains in this market, कि जहाँ पे as a result of the overall market being depressed, there are certain stocks that you can get into that offer you long-term returns. But अगर आप index investor हैं, which for most of the people, I mean obviously it's the single biggest asset class within equities. जब आप funds की बात करते हैं, ETFs are huge. जब आप equity ETFs की बात करते हैं, S&P for example आ गया, is a huge major ETF. अगर आप ETF की या broad markets की बात करें, तो broad markets generally get hurt as the interest rates move up. And that's just a rule to keep in mind as an investor, as when when you're investing into the overall market. So my point is inflation अभी भी ऊपर जा रही है, मगर यहाँ पे जो market pick कर रही है वो ये है कि now, as I've said here, is that the market is now pricing in an 81% probability of a 50 basis points rate hike rather than the 75 points rate hike that the central banks have indicated in the past. So, and there's been some central bankers who have indicated that the US Federal Reserve will most likely take a more slower rate hike policy, or more not accommodative, but it will slow the pace of the rate hikes as it moves into peak interest rates. And that is being taken very solidly by the market, that as inflation sort of stabilizes, moves down, maybe inflation will maybe interest rates will start to not spike as much as they're spiking. Abhi pichle, obviously last week or 2 weeks before, last week if I'm not wrong, Federal Reserve hiked its interest rates by 75 basis points as well. So we're continuing to see that. Hopefully this slows down, and this is why the market is in the positive, in the green so far. Overall still in the red for year to date. Finally, we have finally at our hand, मतलब COVID में ऐसा नहीं हुआ, but we now have it. We have our Lehman Brothers moment, as they're calling it, for the crypto industry, and that is essentially FTX, which is a cryptocurrency exchange, one of the biggest exchanges according to CoinDesk, alongside Binance, which is also an exchange that is set outside of the US, set up outside of the US, and has, if I'm not wrong, Singaporean founder. This is an American founder, FTX, Sam Bankman-Fried, or SBF as they call him. This individual found this crypto exchange, and essentially it's not complicated, but it's definitely not exactly very straightforward as to what has happened. But हुआ ये है कि, long story short, FTX has had essentially, पता ये चला है, इसको आसान तरीके से समझाने का मे बी एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आप एक एक्सचेंज पे, फॉर एग्जांपल अगर आप रॉबिनहुड पे, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पे, किसी पे भी अपना एक स्टॉक खरीदते हैं, तो होता ये है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट इज कि जब आप वो स्टॉक बेचेंगे तो आपको पैसे अपने वापस मिल जाएंगे, राइट? तो हुआ ये है कि FTX की कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पता ये चला कि दे आर नॉट गुड फॉर द मनी दैट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इनटू दिस एक्सचेंज. तो हुआ ये कि एसेंशली FTX के जो बेसिकली एक्सचेंज था itself, that was taking a lot of, there were a couple of other companies set up, and what it was doing is that they had this token called FTX token. अच्छा, अब FTX token का होता क्या था, उसमें एक फीचर ये था कि आप FTX token खरीदें और हमारे प्लेटफॉर्म पे आने का आपको FTX टोकन यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल कोई एक क्रिप्टो, फॉर एग्जांपल आप बिटकॉइन ख़रीद रहे होंगे, तो आप उसको 3x लेवर कर सकते हैं इस FTX की वजह से. अब ये टोकन फॉर एग्जांपल इफ़ आई कैन गो हियर, ये टोकन फॉर एग्जांपल ये कोलैप्स से पहले ट्रेड होता था अराउंड $22, ठीक है ना? तो दिस टोकन कुड बी यूज टू लेवरेज an asset that is at a मतलब काफ़ी higher obviously dollar amount, right? And
One of the features. Another feature was कि आपकी जो brokerage cost है that comes down and that pays for itself. But a lot of that had क्या कहते हैं essentially the idea that FTX would stay at a certain amount and FTX itself would not collapse. एंड FTX हुआ ये कि फिर लीक डॉक्यूमेंट सम सजेस्टेड दैट FTX की एक कंपनी है Almeida Research के नाम से, and what Almeida Research was doing is apparently it's a hedge fund, and what it was doing is that it was collecting a lot of, it had an insane amount of FTX tokens that it had acquired, Almeida Research, and it was basically हुआ ये कि Almeida Research made a lot of bets with clients' money, and which basically blew up in their face, and हुआ ये कि they ended up ending up insolvent, and as a result of that there was a bank run on FTX itself. चूँकि जब ये लोगों को पता चला कि भाई इन्होंने इस पैसे के साथ जो क्लाइंट का पैसा था, ठीक है ना, इस एक्सचेंज में डला हुआ था, वो पैसा इन्होंने, अब मतलब एलिगेशंस आ रही हैं कि मिसअप्रोप्रिएट भी किया है, बहुत सारा पैसा जो क्लाइंट का पैसा था वो मूव कर गया इनटू एसेट्स दैट आर क्रिप्टो एसेट्स दैट डू नॉट मेक एनी सेंस. तो हुआ ये ऑल इन ऑल कि FTX itself was running a sideshow that essentially went bankrupt, and वो जब लीक हुई है न्यूज़ तो FTX पे भी ये सारी कहानी आ गई. तो ऑल इन ऑल FTX का अपना जो US बेस्ड एक्सचेंज है वो तो चल रहा है, which is ftx.us, वो तो that's still working, but basically जो उनकी जो बहामास में जो रजिस्ट्रेशन थी, जापान में और मल्टीपल अदर jurisdictions, वहाँ पे उनके ऑपरेशंस को फ्रीज कर दिया गया है अभी फ़िलहाल. ऑल इन ऑल द एक्सचेंज हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट as a result of the fact कि जब आपने पैसे निकालना चाहे तो वो फिर पैसे निकल ही नहीं रहे थे, and they actually halted withdrawals, right? So इसका आसान, एज आई सेड, आसान तरीका ये समझने का है, जब आप एक्सचेंज पे जाते हैं कुछ खरीदते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं जब आप बेचेंगे उसको तो भाई आप वो पैसे अपने अकाउंट में वापस ले लेंगे, तो वापस ही नहीं आ रहे थे पैसे. तो इसका मतलब ये है कि ये जितना भी इशू, जितनी भी स्टोरी बनी है, ये सारी एक्सचेंज रिलेटेड है. क्रिप्टो करेंसी इन इटसेल्फ जो है वो, मतलब उसके अंदर कोई ऐसा फॉल्ट सही. नहीं है. देखें, अच्छा इसमें देखें, बात दरअसल ये है कि किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होती है, व्हाटएवर यू आर विलिंग टू पे, राइट? अगर आप मतलब कोई बिल्डिंग खरीदने जाते हैं या कोई अपार्टमेंट खरीदने जाते हैं, इट्स व्हाटएवर द वैल्यू द सेलर इज सेलिंग एट, व्हाटएवर द वैल्यू यू आर गोइंग टू बाय इट एट, राइट? और उस पर जो डील हो जाती है दैट्स द लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ दैट अपार्टमेंट. तो उसी तरह स्टॉक्स के भी यही है कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. एक्सचेंजेस क्रिएट दैट environment to have that confidence in those assets. अब दुनिया का, अब मतलब रॉबिनहुड, इंटरैक्टिव ब्रोकर रातों रात बैंकरप्ट हो जाते हैं, मतलब दैट्स अ ह्यूज ब्लो टू कॉन्फिडेंस ना, बिकॉज रॉबिनहुड पे कितने इन्वेस्टर है जिनका पैसा फंस गया है, अब वो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे. जब वो ट्रेड नहीं कर पा रहे तो फिर स्टॉक्स में मूवमेंट कहाँ से आएगी? फॉर एग्जांपल, अगर आप सोचें कि पूरी दुनिया का जितना भी स्टॉक्स में पैसा है वो सारा दो क्या कहते हैं एक्सचेंजेस कर रहे थे, इंटरैक्टिव ब्रोकर और रॉबिनहुड. इमेजिन करें रॉबिनहुड बस चला जाता है, रॉबिनहुड का सारा पैसा, जो क्लाइंट्स का सारा पैसा रॉबिनहुड में डला हुआ था एज एन एक्सचेंज, मैं कह रहा हूँ एज एन एक्सचेंज टू बाय, वो डला हुआ तो बिटकॉइन में ही होगा, बट अब वो पैसा फंस गया है, अब वो पैसा फंस गया है ना. तो हुआ ये कि वो कॉन्फिडेंस उस एसेट से भी तो निकलेगा ना, हवा उस एसेट से भी तो निकली. हुआ क्या कि जब आप विड्रॉल करने गए अपने एक्सचेंज में से पैसे, तो भाई आपने, हो सकता है आपने फॉर एग्जांपल सोचो यार मैंने FTX में के एक्सचेंज पे बिटकॉइन खरीदा हुआ है, अब यहाँ पे तो FTX वाले मेरी एग्रीमेंट ही नहीं ऑनर करने वाले, मे बी दे आई एम नॉट एबल टू पुल आउट माई मनी. तो भाई सबसे पहले तो मैं सारा पैसा निकालने की कोशिश करूंगा. सारा पैसा निकालने के लिए मुझे बिटकॉइन बेचना पड़ेगा ना. तो जब मैं बिटकॉइन को बेचूंगा फिर ही कैश आएगा मेरे एक्सचेंज में, और फिर एक्सचेंज से मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा. पहले एक्सचेंज में कैश शो होता है ना. बिल्कुल. तो एक्सचेंज खुद तो बैंक है नहीं, एक्सचेंज मतलब इट इज अ बैंक, बट एक्सचेंज ये तो नहीं है ना कि एक्सचेंज का कोई कार्ड है जिसको मैं ट्रांजैक्शन कर लूँ सुपरमार्केट में जाकर. तो जब बैंक का ही कार्ड है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैश विड्रॉल्स करने के लिए, तो अब मैंने जब एक्सचेंज से फॉर एग्जांपल रॉबिनहुड से पैसे निकालने की कोशिश की, अब रॉबिनहुड कह रहा है पैसे ही निकाल सकते हैं, तो भाई मैं तो फ्रीक आउट कर जाऊंगा, मैं तो बाकी भी बिटकॉइन बेचूंगा, कोशिश करूंगा निकालूं. या फॉर एग्जांपल इट कुड ट्रिगर अ बैंक रन ऑन अदर एक्सचेंजेस, ठीक है ना. आई कुड गो इन इंटरैक्टिव, भाई मैंने कहा कि रॉबिनहुड में तो फंस गया मेरा पैसा,
मैंने कहा यार कम से कम मैं इस एक्सचेंज से तो निकाल लूँ ये जो इंटरेक्टिव ब्रोकर्स का एक्सचेंज है। अच्छा, आप एक और बात याद रखिएगा कि अल्टीमेटली इंटरेक्टिव ब्रोकर इज अ ब्रोकर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। रॉबिनहुड इज अ ब्रोकर, ये खुद एक एक्सचेंज था, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना, उस तरह ये एक एक्सचेंज था। लाइक लिटरली दैट्स वेयर द बायर्स एंड सेलर्स केम टू एक्सचेंज देयर मनी। तो एन एक्सचेंज गोइंग बैंकरप्ट इज ह्यूज कॉन्फिडेंस, मतलब डिमोरल, मतलब डिमोरलाइजेशन। हाँ, मेरे ख्याल में ये समझना ज़रूरी है कि ये एक्सचेंज था, ये ब्रोकर नहीं था कि जिसके थ्रू आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे थे, ये एक एक्सचेंज था जिसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग हो रही थी। यानी ये वो प्लेटफ़ॉर्म था जिस तरह आप ब्रोकर है, इंटरैक्टिव ब्रोकर है, वो उसके थ्रू आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ये इसके थ्रू शायद आप खरीद भी सकते थे, ये एज़ अ ब्रोकर भी काम करता था, लेकिन ये इटसेल्फ एक्सचेंज भी था। एग्जैक्टली एक्सचेंज था, एंड अल्टीमेटली एक्सचेंज था जिसने एक FTX टोकन निकाला हुआ था। उस FTX टोकन को उन्होंने कहा था कि ये ख़रीदो, जितना FTX टोकन ख़रीदोगे उतना तुम लोगों को फ़ायदा होगा। पता ये चला कि भाई वो FTX टोकन की वर्थ ही नहीं कोई, चूँकि वो FTX टोकन की बेसिस पे आप अब कोई क्या कहते हैं, बेसिकली दैट बिकेम वर्थलेस एंड अनयूजेबल। तो जब लोगों को ये पता चला तो लोगों ने FTX बेचना शुरू कर दिया। जब FTX बेचना शुरू किया तो दैट बेसिकली मेड अ रन फॉर द एंटायर कंपनी, बिकॉज हुआ ये कि पता ये चला कि भाई वो तो दे कुड नॉट ऑनर देयर कमिटमेंट्स। मतलब FTX का टोकन जो है दैट्स बैक्ड बाय क्या, कैश ना। अगर कैश में आपके पास है, आपका कैश मैंने ले लिया, FTX टोकन आपको दे दिया, अब FTX टोकन अगर आपने बेचना हो तो मैं ही आपसे खरीदूंगा ना। आई हैव टू ऑनर दैट कमिटमेंट। ये तो एक लूप होल है ना अशर भाई, जिस तरह वो एक इंडियन फ़िल्म भी आई थी अभी रिसेंटली शायद 2-4 साल पहले, स्कैम करके कुछ थी जिसके अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से स्कैम हुआ था कि कोई ब्रोकर था जो इन्वेस्टर से पैसे लेकर उनको ये बताता था कि ये इन्वेस्ट हो चुके हैं, और उसमें कोई ऐसा लूप होल था कि वो उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट कर देता था। तो लो उनके इन्वेस्टर्स को ये लग रहा होता था कि हमने ये स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, लेकिन असल में उसने अपनी कोई और इन्वेस्टमेंट की हुई होती थी। बेसिकली उनको लोगों को ये लगा कि हमने FTX टोकन खरीदा हुआ है, मगर रियलिटी में उन्होंने फॉर एग्जांपल कोई जंक क्रिप्टो एसेट खरीदी हुई थी, कैश नहीं था वो, ठीक है ना। तो वो क्रिप्टो एसेट को खरीदी, अब वो ब्लो अप कर गई तो हुआ ये कि FTX आपका मतलब बेसिकली उनके पास कैश ही नहीं था टू एक्चुअली रिडीम दैट, टू मेक दैट रिडेम्पशन, टू अलाउ फॉर द रिडेम्पशन टू हैपन। जब वो रिडेम्पशन नहीं हो पाई तो फिर द होल थिंग ब्लू अप इन द फेस बेसिकली। हुँ। Overall the trend is still, they're still in the downtrend. जो weekly पे मैं देख रहा हूँ, the move was quite big. It took out the previous basically it took out the last 2 weeks level of 390, and basically it's now trading at 398. हमारा जो overall level था वो 405 था, जो हमने पहले भी इसको reiterate करते रहे, and I think that's a very good lesson in something which is कि markets at the end of the day will, you don't know when they bounce back, but you have to understand that where is the market oversold and in what position it is undersold, मतलब overbought, sorry. And ये चीज़ों को levels को समझना बड़ा ज़रूरी होता है, and that's what happened. I felt the market was oversold when it was just plunging through. Obviously you can never predict कि कितना plunge करेगी, could have plunged even higher, more. And वही वाली बात है कि it seems like some of the bets would have paid off for a lot of investors that thought that the market was oversold, in that when it reached out to below 30 levels, around 30 levels in October, and then essentially अभी भी मुझे लग रहा है कि जो breakout है weekly पे, that's quite important, because when you see what has happened is that market RSI basis पे was in a downtrend for every high that it took out. ये जो नया हाई निकला है that has definitely broken it. अब देखते हैं कि ये can it sustain. वीकली पे यूजुअली अगर ब्रेक्स आते हैं तो मतलब बेसिकली हायर टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेक्स आते हैं तो दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन. Can it sustain? Let's see. On the daily as well, as I said, कि things are
लुकिंग रीजनेबल। जो ओवरऑल लेवल्स हैं इस वक्त ट्रेडिंग के, वो ज़्यादातर मूवमेंट मैंने पहले भी कहा था कि ऊपर की तरफ हुई थी, एंड लेट्स सी इफ इट कैचेस अप बैक टू दैट लेवल 405 408 या 400 इश। अभी तक तो 398.5 पे अटका हुआ है, एंड लेट्स सी इफ इट कैन ब्रेक 400 नेक्स्ट वीक, एंड देन विल आई गेस विल टेक इट फ्रॉम देयर। अच्छा अच्छा भाई, जाते-जाते इसी ऑयल के ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा कमेंट कर दें। एक पिछले 1 महीने की ऑयल प्राइसेज़ को अगर हम थोड़ा-सा देखें तो मोर और लेस जो है स्टॉक्स जो इस सेक्टर के अंदर लाए करते हैं वो 8 टू 12% जो है वो पॉज़िटिव हैं। और हम जब इन स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद अभी ये कोई मुस्तकबिल करीब में तो होने वाला नहीं है ऐसा। लेकिन अब ज़ाहिर है ये चीज़ हमने अपनी आँखों से देख ली है, तो अब ये कब तक जो है ये वाला प्लान काबिल अमल रहेगा और उसको हम ऑयल खरीद के रखें, या ऑयल की प्राइसेज़ मज़ीद इधर ही रहेंगी या इससे नीचे आएँगी? Yeah, I think overall, what I think is oil prices are here to stay for now. मुझे जो नज़र आ रहा है वो तो यही है, but I think probably profit taking would not be such a bad idea. I mean, from my vantage point, I don't have an exact answer for this, but from what I'm looking at, we're still in the I mean, we're still in positive territory. Market actually यानी इस वक्त जो क्लोज हुआ है, लास्ट क्लोज वो है $96 का, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी डिसेंट क्लोज फॉर नाउ। यानी ऑब्वियसली टच दिस कमिंग फ्रॉम $86 एंड चेंज, बट ओवरऑल सम ऑफ द प्लेयर्स दैट मतलब फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बात की है, एंड फेयर डिस्क्लोजर आई डू ओन हैव अ पोजीशन इन हैलिबर्टन, कि मैंने हैलिबर्टन के बारे में बात की थी कि इट मूव बैक फ्रॉम 24 25 टू ऑलमोस्ट $40। अब यहाँ पे आकर जो मुझे लग रहा है वो यही है कि मे बी देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पॉज, एंड देन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सेल ऑफ। ओवरऑल मुझे ऑयल में अभी भी आई फील दैट देयर इज़ आप समझ लें कि तेज़ी का ही ध्यान है फ़िलहाल तो, गिवन दी फंडामेंटल ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, ठीक है। मेरे ख़्याल में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लिया। बाकी ये इलॉन मस्क जो हैं आपकी रात को ढाई ढाई बजे लोगों की जो है ना वो ईमेलें करके उनको जगा रहे हैं कि भई हम आपको फायर करने वाले हैं, आने वाले दिन मुश्किल होंगे। देख लें यार, आप आरंट यू लकी टू बी क्या कहते हैं, हैविंग वंडरफुल बॉसेस जो कि आपको कम से कम एक महीने का नोटिस दे देते हैं। नोटिस पीरियड तो मिलता है। हाँ, बस ये तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब इलॉन बिल्कुल मस्क आए हैं बिल्कुल। तो ट्विटर अब पता चलेगा लोगों को ट्विटर भी कोई चीज़ है। $8 पे करें और ब्लू टिक ले लें। $8 पे करें और जीसस क्राइस्ट बन जाए भाई ट्विटर पे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मतलब माय गॉड, हिलेरियस। एनीवेज, चलें ठीक है अशर भाई, इसको फिर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो उनको पता है कि क्या करना होगा। जिन्होंने हमारी बाकी एपिसोड्स नहीं देखी, पीवीएच एपिसोड्स नहीं देखी, टू द मून जिसके ऊपर हम बेसिक टेक्निकल और फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, आप वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम। For more insights, join our limited access Discord channel now.